वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, इट्स सोनिया हियर और आज हम करने वाले हैं डिकोपाज आर्ट. बट बिफोर दैट प्लीज़ डू चेक आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 900 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, सो यू गाइज कैन लर्न ऑल दोज ट्यूटोरियल्स एब्सोल्युटली फ्री. नाउ कमिंग बैक टू दिस ट्यूटोरियल, सो टीलाइट होल्डर्स के लिए मैंने यहाँ पर लिया है MDF का बेस. जो भी सप्लाईज मैंने यूज़ की हैं उनके लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो चेक आवर वेबसाइट growingcraft.com. बेस को प्रेप अप करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वाइट जेसो. एंड प्लीज़ डू मेक श्योर जब भी आप जेसो यूज़ कर रहे हो, डू नॉट डाइल्यूट इट एंड मेक एटलीस्ट 2 to 3 coats ऑफ जेसो टू योर बेस, सो दैट जब भी आप इसके ऊपर अपने नैपकिन या पेपर स्टिक करें वो अच्छे से स्टिक हो एंड इट गिव्स अ नाइस वाइट बैकग्राउंड टू योर बेस. नाउ अगर आपके पास जेसो नहीं है, प्लीज़ डू नॉट यूज़ द acrylic color, please do not use any other alternate because gesso is different and acrylic paints are different. So you will have to invest a little in your supplies, but please do make sure that you use gesso only. हीट गन यूज़ करके मैंने इसको क्विकली ड्राई कर दिया और अब इसके ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा डिकोपाज ग्लू. सो डिकोपाज ग्लू इज़ यूजुअली ट्रांसपेरेंट. अगर वो थोड़े वाइटिश में आते हैं तो स्टिल इट इज़ ट्रांसपेरेंट वंस यू अप्लाई इट. सो मैं मेरे साइड्स में डिकोपाज पेपर स्टिक करने वाली हूँ. सो मैंने ऑलरेडी मैसिव डिकोपाज पेपर का स्ट्रिप कट करके रखा है विच आई एम sticking here right now, and you guys can check the huge decoupage paper collection on our website at growingcraft.com. links are there and you can check this. जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट करने के लिए आई एम यूजिंग माई सैंड पेपर. एंड द मोमेंट आई एम डन विद दिस आई एम गोइंग टू स्टिक वन मोर पेपर, एंड जो हमारा एक पार्ट रह गया है वहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टिक माई डिकोपाज पेपर. सो जब भी आप डिकोपाज पेपर स्टिक कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई योर डिकोपाज ग्लू नाइसली. अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे इट इज़ गोइंग टू लाइक create wrinkles and bubbles in your decoupage papers also. Of course, tissues से papers are super easy to use, but then you have to make sure that you use it wisely. Sandpaper is something which I really vouch for because it is actually super nice to just cover up your base nicely and like literally take out every excessive part of your papers or the napkin. यहाँ पे मैं मेरे पेपर को सील कर रही हूँ विद अ वार्निश, एंड मैसिव पेपर्स के ऊपर वार्निश वर्क्स आउट प्रिटी वेल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड इट विल मेक श्योर कि जिसका कलर टेक्सचर है वो कहीं पर भी चेंज ना हो. Now again I'm using my heat gun. Now this is one of the super tool which I feel all of the crafters should have this tool. So अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हमारा chalk paint. We have a huge collection of chalk paints and this was something which was actually matching with my base really well, and I'm going to have good nice one coat of chalk paint and then I'm going to use my heat gun again. So actually drying process को कम करने के लिए you can use your heat gun, and you can see here I'm putting up my another coat. I could do this very quickly because मैंने अपना heat gun use किया था. Doing 2 coats is not a compulsion, but is it for a very nice and smooth and an even color finish work. It is good to have like 2 coats of gesso, 2 coats of color. They actually give a very nice solid background. अब यहाँ पर मैंने transfer sheet stick किया है and I'm adding water to it. This is a very fun technique transfer sheets use करने के लिए, and just stick the part. आपको उसको पीछे से wet करना है for like 15 seconds and very slowly आपको उसको slide करना है and it is going to come out really well. And here you can see how beautiful it looks. So honestly मैंने जब ये Tlight holder बनाया था, I had used it for a festive, like I wanted to make this for a festive season, so that is the reason I thought of adding my new elements to it. So here just adding my stamp. Now this is a massive stamp which I'm using here, and massive stamp is just to add a little more drama. So use your permanent ink pads. Here I'm using a black one. If you check our website you can see a lot of new colors there. अब हम use करने वाले हैं हमारा varnish, but here is a little like trick. Use your glitters, use your massive glitters with your varnish and they work out so nicely. So you can see how shiny it looks, and honestly after drying मेरा जो पूरा Tlight holder है it is actually shining and it is looking very bright. I'm sure you can see that on camera as well. So add a pinch of glitter to your varnish and apply at least 2 coats of varnish to whichever the decoupage and mixed media art you are doing. So as you can see, whenever you are doing your glitter वाला varnish, you just पहला coat आपका होगा glitter with varnish,
Second is going to be just the varnish part, and here it is done. So I really hope you guys enjoyed this session. All the supplies listed here in the video description box. Do check that, and thank you so much for watching, guys. Take care. Bye bye.